Please open FCOM, open ventilations, which is 21-30. Have you opened 2130? Are you on the index page? Let's have a look at the index. 2130 talks about ventilation. Can anyone tell me what is ventilation in simple words? To circulate the quality of air basically. Absolutely, it's the circulation of air. The circulation of air is known as ventilation. गाड़ी में देखो दो चीजें होती है, एक होती है एयर कंडीशनिंग, एक होती है वेंटिलेशन. What do you mean by air conditioning? You have studied air conditioning under 21-10. What is ventilation then? For example, you sit in a car, you turn the ACs on. That is the air conditioning packs of your aircraft. And in the case of your car, your car. What will you do if the air conditioning is not working? You will open and roll down the windows. घर में मम्मी खाना बनाती है, तड़का लगाती है, क्या करते हो? एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देते हो और खिड़कियां खोल देते हो. दैट इज व्हाट एवरीवन डज. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? गर्मी हो जाती है, बिजली चली गई है, खिड़की दरवाजे खोल देते हो, क्यों? हवा आएगी, वेंटिलेशन होगी, क्रॉस वेंटिलेशन होगी. वेंटिलेशन इज द induction of fresh air, removal of the impure air. Okay, that is ventilation. It has to do with cooling the room in the case of your car. It has to do with taking the unfresh air out of your car. And for the purpose of your aircraft, ventilation is for the cooling of your avionics, for the cooling of your batteries, and for the removal of foul gases. Open FCOM 21-30. Can we see the subheaders? Under the subheaders, we have firstly general. जनरल में क्या क्या चीजें हैं? देख लो, वो बस बता रहे कि कहाँ कहाँ वेंटिलेशन हो रही है. लेट्स गो टू वेंटिलेशन जनरल. Ventilation general tells us that the following components are ventilated. Avionics are ventilated. What is avionics? You all have flown a glass cockpit. The glass cockpit consists of a G3X, a G1000, or the G1000 Gen 3, right? In all of these aircrafts, these are all computerized aircrafts which have a glass cockpit, right? Now, ये glass cockpit का जो पूरा computer है, सो एवियनिक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया G3X गार्मिन वगैरह में, इनके जो कंप्यूटर्स हैं ये कहीं पे एक जगह प्लेस्ड रहते हैं सारे, उसको कहते हैं एवियनिक्स. ठीक है, आपका अगर रेडियो है तो रेडियो का ट्रांसमीटर, रेडियो का रिसीवर, ट्रांसीवर, वो सारी चीजें आपकी एवियनिक्स होती हैं. नाउ ये एवियनिक्स जस्ट लाइक कंप्यूटर्स गर्म हो जाते हैं, दे नीड कूलिंग. जैसे आपके सीपीयूज में पंखे रहते हैं, दीज ऑल्सो नीड कूलिंग. सेकेंडली यू हैव बैटरीज. बैटरीज ऑल्सो नीड वेंटिलेशन. बैटरी भी गर्म होती है जब डिस्चार्ज होती है और जब चार्ज होती है. ओके. लास्टली लैवेटरी एंड गैली. जो कैबिन में जो हवा है वो रिसर्कुलेट होकर मिक्सर के थ्रू जाके वापस आपके पास आती है. बट डू यू रियली वांट टू रिसर्कुलेट द लैवेटरी एयर? थिंक अबाउट इट. नो, राइट? इट्स फाउल. डू यू वांट टू रिसर्कुलेट द गैली एयर? नो. गैली में मस्त पोहे बन रहे हैं, हॉट चॉकलेट बन रहा है ना? तो ये सारी चीजें जब खाना वाना बन रहा है, उसकी स्मोक आ रही है, यू डू नॉट वांट दैट टू बी रिसर्कुलेट. ठीक है, तो जो भी हवा लैबोरेटरी और गैली से होती है वेंटिलेट होकर सीधा आउटफ्लो वाल्व में पीछे फेंक दी जाती है. Then the cargo ventilation system is also there. Okay, so these are the four things that are ventilated. We are done with the first section of ventilation, that is 2130 general, 213010 general. Now this entire chapter is divided into avionics ki ventilation, battery ki ventilation, and lavatory and galley ventilation. Out of these 20, 40 and 50, 30 is missing. 20, 40 and 50, 20 is the biggest avionics ventilation. Questions mostly yahin se aayenge. Okay, let's have a look. So now we are going to start with 21, 30, 20 avionics ventilation. Open avionics ventilation. It has the following components. General, it gives you a general picture. Components बताएगा. उसके बाद configurations बताएगा. गिन के कितनी configurations है? 3 configurations है. वो तीनों configurations कब कब होती हैं?
पढ़ा है A320 के ग्राउंड क्लासेस में, बहुत कंफ्यूजिंग लगा था कि ये 9 डिग्रीज, 12 डिग्रीज, 32 डिग्रीज, 35 डिग्रीज, ये वो खोल लो, ओपन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज सर्किट कॉन्फ़िगरेशन एंड रीड when is it closed, when is it open, when is it intermediate. Just scroll through it, have a look how complicated it is it very complicated. एंड MSNs टू MSNs भी हमारे पास डिफरेंसेस हैं. नीचे एक टेबल रहेगा, नीचे एक इमेज रहेगी जिसमें एक लॉजिक गेट डायग्राम है. इतना पढ़ोगे तो गंजे हो जाओगे. So we don't want to do that. Let's simplify this for you. Let's start with avionics ventilation. Eyes on my screen. Avionics ventilation as an entire system cools down the avionics with the help of two things. Okay, in two ways, I would say. Firstly, there is one way by which you can take fresh air from the outside of the aircraft, cool the avionics and throw it outboard. Okay, in order to do this, you need a fan to take the air in, that is known as the blower fan, and blow it towards the avionics ventilation or towards the avionics. Then you need another fan which is extracting the air out of the avionics and throwing it out. That's known as the extract fan. Any doubts? So this entire avionics ventilation is dependent on these two fans. Okay, one is a blower fan which blows air to the avionics, one is an extract fan which extracts out. Okay, question that is asked in the exam: when do they start working? As soon as the aircraft is supplied with electricity, because as soon as the aircraft is supplied with electricity, the CV panels, बैटरीज भी आएंगी, आपका सारे डीसी बैट बसेस पावर्ड है, हॉट बसेस पावर्ड है, डीसी इसेंशियल, एसी इसेंशियल एंड स्टैटिक इन्वर्टर बसेस ऑलवेज पावर्ड. राइट, स्टैटिक इन्वर्टर बस तो नहीं, बट डीसी इसेंशियल एंड एसी इसेंशियल तो हमेशा पावर्ड है. उससे रिलेटेड अप्लायंसेज और कंप्यूटर्स हमेशा पावर्ड है, फैक्स, सीलैक्स, ये सब तो हमेशा पावर्ड है. सो एज सून एज any electrical avionic equipment is working, the avionics ventilation is also working. Okay, at any given point of time, if the avionics system is not working and the aircraft is supplied with electricity, an external horn will sound. Okay, now this is one way by which you can control it. This is one way by which you can control it. You can take air from outside, throw it to the ventilation avionics, take the hot air away. ठंडी हवा लोगे, गर्म हो जाएगी वो हवा एंड वो बाहर फेंक दोगे. This circuit is known as the open configuration. This configuration is known as the open configuration. Next, we have the closed configuration. This means बाहर की हवा बाहर रहेगी, अंदर की हवा अंदर रहेगी, वो मिक्स नहीं होगी. ठीक है, कोई बात नहीं. तो तुमने गर्म ठंडी हवा ली, एवियोनिक्स में डाली, वो गर्म हो गई. अब क्या करोगे? ये गर्म हवा को तुम एक हीट एक्सचेंजर या एक रेडिएटर के थ्रू भेजोगे, वो ठंडी हो जाएगी, फिर वापस उसको रिसर्कुलेट करते हो. Where is this heat exchanger? This heat exchanger, as a when you sit in a cockpit, so you have your overhead panel, your instrument panel, and your center pedestal. So this entire thing is housed inside a fuselage, the front portion of a fuselage. ये जो front portion of a fuselage है ना, इसके अंदर ही एक स्किन एयर हीट एक्सचेंजर है. तो वो जो एवियोनिक्स है ना, वो ये स्किन का एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है. वो स्किन के दो लेयर्स के बीच से ये हवा जाती है. अब ये स्किन तो ठंडी होगी क्योंकि इट इज इन कांटेक्ट विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर. सो दिस हॉट एयर इज मेड टू पास थ्रू द मिडल ऑफ द स्किन लेयर्स so that it cools down and then it comes back and hits the avionics. This is known as the closed circuit configuration. Yes, Vedant. सर ये जो गैप रहता है स्किन के इसमें, ये कितना बड़ा रहता है? I genuinely do not have an idea of this, but I will tell you. I am estimating around this much. नहीं, क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट एंटर करते हैं कैबिन डोर से, उसका स्किन दिखता है ना हमें, कितना पतला रहता है वो.
तो उसके बीच में है कि थोड़ा कुछ है और? नहीं नहीं नहीं, सो जो आप नहीं ना? देखते हो वो स्किन इतनी पतली है, दैट्स लाइक फ्यू मिलीमीटर्स थिक। हाँ। ठीक है, सो दैट इज द आउटर स्किन, दैट इज वन लेयर। फिर उसमें थोड़ा कुछ सेंटीमीटर्स का गैप रहेगा एंड देन देयर विल बी अनदर लेयर। तो वो जो दो लेयर्स हैं सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, उनके बीच का गैप। बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर को हॉलो बना देता है कि वहां से हवा पास हो जाए ना। यस यस, सो द फ्यूजलाज, this is the outer skin of your fuselage, this is the inner skin of your fuselage, सर एक and बार गूगल कर सकते हैं क्या आप? I will send you the image on the group. ओके ओके, इतना थिकनेस हो सकता है कि इससे कम ही नहीं, रहेगा? this is not to scale, दिस इज फॉर डायग्राम this is for पर्पसेस। diagram purpose. हाँ हाँ। नहीं, ये तो मुझे पता था कि ऐसा है। मेरे को असली में कितना मतलब क्या रहता है, Yeah, क्योंकि वही ये डाउट था मेरे को मेरा भी कि लगा। स्किन तो इतनी पतली है ना, तो कितना वो है क्या? Only an engineer will be able to tell you this. हाँ एग्जैक्टली। Okay, ऐसे ही रैंडम डाउट था। now for those who will be seeing this on YouTube or as a recorded lecture, this is the image that I was talking about. ठीक है, एक आउटर स्किन है, एक इनर स्किन है, एंड उन दोनों के बीच से हवा जा रही है. So this is the cold air coming in from here. It is entering the avionics, getting hot, passing through the skin air heat exchanger, and it is becoming cold, and again going back to into your avionics. Am I clear? This is the closed configuration. We will study these configurations in further detail in some time. Okay. We also have an intermediate configuration and a smoke configuration. So there are four such configurations. Now these configurations are controlled with the help of valves. Who controls all these valves? These two computers are responsible for it. Primarily, the main computer is the AEVC, Avionics Equipment Ventilation Controller. It is a ventilation controller which controls the ventilation for the avionics equipment. Okay, it takes care of the entire system. It controls all of these valves. It controls all of these valves, and it also controls these two fans. But for the purpose of controlling these two fans, you need a fan speed controller. ओके, सो बेसिकली एईवीसी सारे वाल्व्स को कंट्रोल करता है, और जब फैंस की बारी आती है तो एक और फैन स्पीड कंट्रोलर है. ये फैन स्पीड कंट्रोलर ब्लोअर और एक्सट्रैक्ट को, फैंस की स्पीड को डिसाइड करता है. बाकी सारे वाल्व्स को कौन भेजेगा इंफॉर्मेशन? एईवीसी भेजेगा. एनी डाउट? नो डाउट. कुणाल, आर यू देयर? हाँ भाई, वो इंटरनेट का बहुत इशू है यहाँ पे, तो मैं वीडियो ऑफ ही रख रहा हूँ। बार बार ओके बंद हो रहा है वो। ओके, नाउ talking about valves, whenever you were studying this chapter, how many of you have faced confusion in the names of these valves? कितने बहुत वियर्ड से ही valves के नाम है ना, and कितने confusing है. So let's understand the names of these valves first and the architecture together with it. Okay, I'm going to first explain you the architecture and then the names. Air comes from here, goes to the avionics, hot air goes out. Now because you're taking the air from the outside, there has to be a valve which is controlling the inflow of air. There has to be a valve which is controlling the outlet of air, right? Now, where will this particular valve be mounted? It will be mounted on the skin of the aircraft. So, skin, air inlet valve. Skin, air inlet valve. Many people read it as skin air inlet valve. No, it is an air inlet valve in the skin. Okay, skin, air inlet valve. Clear? Similarly, when it goes out, it's an air outlet valve. It's an air outlet valve. Any doubts?
So we have two valves. Now let's talk about the skin exchange isolation valve. ठीक है? Skin अलग word है, exchange अलग word है, isolation valve. So let's talk about closed configuration. You have cold air cooling the avionics, becoming hot. Now the air does not go out. In fact, it goes through the heat exchanger. Which valve controls the flow of air through the heat exchanger, which is the skin exchange isolation valve? Skin. Where is this valve? It's on the skin of the aircraft. What is it controlling? It is controlling the heat exchanger isolation valve. So if you close this valve, you are isolating the heat exchanger. You are isolating the heat exchanger. Clear? If you open this valve, the air will flow through the skin air heat exchanger. Okay, so it's an exchange ka isolation valve. It is a heat exchanger ka isolation valve. Any doubts? No doubts? If you open this valve, the air will flow through the skin air heat exchanger, get cooled. So this is the skin of your aircraft and this is the inside fuselage panel of your aircraft. इनके बीच से ये हवा फ्लो होती है, गर्म हवा फ्लो होके ठंडी हो जाएगी एंड फिर वो बाहर निकलेगी. इट विल कम आउट. ओके, नाउ this cold air goes and hits the avionics equipment again. Easy? No doubts? This warm air, sometimes if 100 air is coming here, maybe 90 air is going here. Some of the air can go for the purpose of heating inside the cargo underfloor as well. Now, where is the cargo underfloor exactly? What do you mean by cargo underfloor? Please have a look. So you have the cargo compartments. उसके ऊपर जो फ्लोर है उसको कहते हैं अंडरफ्लोर. तो जहां पे हम एज कैबिन में खड़े रहते हैं, जहां पे हम चलते हैं, उसके नीचे और कार्गो के बीच में देयर इज अ लेयर. यहां पे गर्म हवा प्रोवाइड की जाती है. ठीक है? एनी डाउट्स? सो दैट इज द कार्गो अंडरफ्लो एरिया. यस, टेल मी. सर आपने क्या बोला, कार्गो में गर्म हवा जाता है? दिस इज द कार्गो कंपार्टमेंट. हाँ हाँ. दिस इज द प्लेस वेयर द कैबिन इज. इन दोनों के बीच के लेयर को क्या बोलेंगे? अंडरफ्लो. फ्लोर के नीचे अंडरफ्लोर. ये जो अंडरफ्लोर है, इन दोनों के कैबिन और कार्गो के बीच की जो लेयर है, फ्लोर के नीचे की जो लेयर है, उसको कहते हैं अंडरफ्लोर. गर्म हवा यहाँ पे भी डाली जाती है, फ्लोर हीटिंग. मेरा डाउट है कि कोल्ड एयर जा सकती है क्या वहाँ? हॉट एयर. व्हाट इफ देयर इज अ नीड? कोल्ड स्टोरेज में भी पता नहीं कार्गो का होगा. आई एम नॉट श्योर यार, क्योंकि एयर कंडीशनिंग पैक्स का इससे कुछ लेना देना है नहीं ऑनेस्टली. बराबर बराबर. आई डोंट थिंक दैट. एक और डाउट है इस पे, एक और डाउट है. ये जो हॉट एयर टेम्परेचर जा कितना रहा है, होता होगा? हाँ एग्जैक्ट ये डाउट था मेरा. क्या? ये टेम्परेचर कितना होता होगा ये हॉट एयर का? आई विल टेल यू. सर मैंने गूगल किया. गूगल इज सेइंग A320 cargo hold temperature is typically maintained between roughly 5 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. नो, दैट इज कार्गो And टेम्परेचर. नो, उसी की बात चल रही है ना? नहीं, कार्गो अंडरफ्लोर की बात चल रही है. अच्छा, कार्गो अंडरफ्लोर की बात चल रही है. यू ओनली आस्क्ड मी. नो. नो नो, आई वाज आस्किंग कि कार्गो के अंदर ठंडी हवा जा सकती है कि नहीं. हाँ. वही डाउट था मेरा सर. Okay, अंडरफ्लोर की बात ही नहीं कर रहा था मैं. I thought you were asking me whether नहीं, cold नहीं. air will go into the cargo underflow or not. ना ना. No, so cargo is air conditioned.
Cargo is air conditioned. Okay, we are gonna do cargo ये बार conditioning. अंडर फ्लोर में ये हवा क्यों भेजी जाती है? व्हाट इज द रीजन अबाउट इट, मतलब बिहाइंड इट? Good question. Basic funda, it's uniform temperature distribution. Again, irrelevant for your exams. Okay. Now that we have covered three valves, there are three more valves. Okay. What are the other three valves? In the case of an emergency, or in the case of an abnormal scenario, if you cannot take fresh air from the outside of the aircraft, from the ambient air, you can always take the air conditioning air or the conditioned air from the air conditioning ducts and use that air conditioned thandi hawa, straight away put it to the avionics. That can be done with the help of the air conditioning inlet valve. The air conditioning inlet valve. The air conditioning inlet valve takes air from the air conditioning duct and directly uses it on the avionics. Okay. Now you have one more inlet and one more outlet. Okay. Here you have the avionics equipment and here you have an avionics bay. Hear me out very clearly. आपके कार्गो, आपके कॉकपिट के नीचे आपका एवियोनिक्स बे है. इस बे के ऊपर कुछ इक्विपमेंट है. ये जो हवा है जो एवियोनिक्स इक्विपमेंट में जा रही है वो डायरेक्ट इन जगहों पे जा रही है, बे में नहीं जा रही है. वो डायरेक्ट इक्विपमेंट को हीट कर रही है और वो इक्विपमेंट से हवा निकल के वापस ठंडी होने के लिए जा रही है हीट एक्सचेंजर में. क्लियर? एनी डाउट्स? समझ आया ना? नाउ जो गर्म हवा है उसका एक आउटलेट है कार्गो अंडरफ्लोर में. ठंडी हवा का एक और इनलेट है विच इज द एवियोनिक्स बे. ओके, थ्रू दीज टू वाल्व्स. अब ये दो वाल्व्स का नाम समझो. स्किन एक्सचेंज इनलेट बाईपास वाल्व. स्किन एक्सचेंज इनलेट बाईपास वाल्व. तो क्या यहां से हवा अंदर आती है? नहीं यार, यहां से हवा अंदर नहीं आती. इसका मतलब क्या है? स्किन एयर हीट एक्सचेंजर जो है, स्किन एयर हीट एक्सचेंजर जो है, स्किन एक्सचेंज मींस स्किन एयर हीट एक्सचेंजर जो है उसकी इनलेट को बाईपास करने वाला वाल्व. यहां से हवा ऊपर जाएगी स्किन एयर हीट एक्सचेंजर में. हम लोगों ने क्या किया? उसके इनलेट को बाईपास कर दिया और हम लोग कार्गो अंडरफ्लो में चले गए. सो दिस इज एन आउटलेट फॉर वार्म एयर. ओके, एनी डाउट्स? सिमिलरली यहाँ पे इसका जो आउटलेट है उसको बाईपास कर दिया हम लोग. ठंडी हवा इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम द स्किन एयर हीट एक्सचेंजर वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द एवियोनिक्स. सो ये है बस वाल्व्स के नाम. अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया पढ़ाना. नाउ I want everyone to close your books, close your FCOMs. Now we are going to study एकदम fresh mind. I want a complete fresh mind. सब भूल जाओ जो अभी पढ़ा. ओके, इतने सारे configurations हैं, इतना सारे valves हैं. Let's make it very simple for you. What is our aim? Our aim is that we have a set of avionics and we need to cool it. In order to cool it, we have three inlets of air. We have three outlets of air. What is the first inlet? Outside air. What is the second inlet? Skin air heat exchanger. These both of them are under normal operation. Under abnormal operation, if both of them fail, we have the air conditioning. That is why these two are kept over here and the blower उसके downstream रखा गया क्योंकि blower यहाँ से हवा suck करेगा, यहाँ से हवा suck करेगा और इनके पास देगा. Let's say अगर आपके पास blower का fault हो गया, which is an abnormal case, right? यहाँ smoke configuration हो गया या फिर यहाँ से हवा नहीं आ रही है, यहाँ से हवा नहीं आ रही. एवियोनिक्स इक्विपमेंट के जस्ट पहले मेरे पास एक वर्स्ट केस सिनारियो को सही करने के लिए क्या है? एयर कंडीशनिंग डक्ट है.
वर्स्ट केस सिनेरियो, आई विल ओपन दिस एंड ये ठंडी हवा यहाँ भेज ही देगा। क्या इसको ब्लोअर फैन की जरूरत है? नहीं, ये हवा खुद यहाँ से भेज देगा। इजी। हाउ ब्यूटिफुल इज द सिस्टम डिजाइन। नाउ यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट है और ये हवा से ठंडा होगा, हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा यहाँ से बाहर निकल। अच्छा, when you're sitting inside the cockpit, there is an overhead panel, there is the main instrument panel, there is the center instrument panel, you have the glare shield, and you have the center pedestal, right? You also have the CB panel on the overhead, that is the 49 view panel. You have the 121 view panel, 122 view panel, 123, 124, 125 view panels. These are all the CB panels that are there. All of these panels also need cooling. So air from the air conditioning area, जो एयर आप कॉकपिट में ब्रीथ कर रहे हो, वही हवा यहाँ से सक इन होती है और ये पैनल्स के अंदर जाती है, उनको ठंडा करती है। कभी आप उसको टच करके देखना, आपको ठंडा महसूस होगा। ओके, सो दैट एयर कंडीशनिंग एयर इज गोइंग थ्रू द कॉकपिट पैनल्स। अब वो गर्म हवा कहाँ निकालेगा? वो एवियोनिक्स वेंटिलेशन डक्ट के गर्म वाले हिस्से में दे देगा। ओके, अच्छा, यहां से हवा अंदर कैसे सक इन हो रही है? कोई सक इन कर रहा होगा, तभी तो हवा यहां से ड्रॉ इन हो रही है। सो द फ्रेश एयर दैट यू आर ब्रीदिंग at any given point of time, even in closed configuration, open, whatever configuration is there, the cockpit panel is always ventilated in any given configuration. क्योंकि भाई ये फैन तो हमेशा चले, इसकी वेंटिलेशन कौन कर रहा है? यहां से हवा कौन सक इन कर रहा है? एक्सट्रैक्ट फैन सक इन कर रहा है। So this extract fan is responsible for sucking in air and to some extent also drawing in air from here and from here. Now अब गर्म हवा को डिस्पोज करने के 3 जगह हैं। या तो तुम बाहर फेंक दो, बाहर नहीं फेंकने, क्लोज कॉन्फ़िगरेशन में रीसर्कुलेट कर दो ठंडा करके, नहीं तो कार्गो अंडरफ्लो में डाल दो कार्गो की हीटिंग के लिए। How beautiful is the system design? I hope you have understood the architecture of the system. I think now it's giving you more clarity, right? Now let's go to the next portion. You are going to go to configuration logic. What is configuration logic? Let's say if you are in a car and you're feeling hot, what will you do? You will open your windows. When you open your windows, हवा, fresh हवा आती है, गर्म हवा बाहर चली जाती है. That's cross ventilation. What do you do when you feel cold? Close the windows. हवा अंदर की अंदर recirculate होगी. Now tell me something. Can you have, ये तो गाड़ी के लिए ना, can you have these windows open when the aircraft is in flight? No, absolutely not. Why? Because the aircraft is a pressurized cabin. The avionics is also pressurized. एयर कंडीशनिंग जा रही है ना वहां पे, प्रेशराइज्ड हुआ। सो क्या आप खुला रख सकते हो जब आप प्रेशराइज हो? नहीं रख सकते। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द समरी? द समरी इज, लेट्स से आप ग्राउंड पे हो, लेट्स थिंक अबाउट ग्राउंड। इफ इट इज कोल्ड, लेट्स थिंक अबाउट द लॉजिक। इफ इट इज अ कोल्ड डे, I will make sure that my windows are closed and I keep recirculating the air inside. But if the temperature is very hot, then I will make sure that कि भाई मेरा हीट एक्सचेंजर, अगर मेरा पूरा एयरक्राफ्ट का स्किन गर्म है, अगर मेरी हवा गर्म है, तो मैं वही हवा को अंदर ही अंदर गर्म हीट एक्सचेंजर में क्यों रिसर्कुलेट कराऊंगा? उससे अच्छा फ्रेश एयर ड्रॉ इन करूं। इजी। In case of in flight, you can never have the open configuration. Let's say in flight, क्यों? पहली बात तो ये समझो, जब आप फ्लाइट में रहोगे स्किन तो ठंडा ही रहेगा। क्यों? बट ऑब्वियस है यार, स्किन है, माइंड यू आर क्रूजिंग एट सच अ हाई ऑल्टीट्यूड, यार you're in contact with such cold air, so 90% of the time it will be in closed configuration. However, if in flight the temperature happens to increase beyond a certain threshold, you will have to take some air and push it out. Why so? ताकि जो अंदर की गर्म हवा है वो थोड़ी बाहर निकलती जाए, वो फ्रेश एयर कंडीशन से थोड़ी हवा आती जाएगी, थोड़ी थोड़ी हवा आती जाएगी, बट गर्म हवा आप थोड़ी बाहर फेंक रहे हो, थोड़ी सी बाहर फेंक रहे हो,
एक छोटा सा इनलेट फ्लैप होता है, वो छोटे इनलेट फ्लैप की मदद से बाहर फेंकते हैं। सो यहाँ पर जो स्किनर आउटलेट वाल्व है ना, यहाँ पे एक छोटा इनर फ्लैप भी रहता है। वो इनर फ्लैप अगर छोटू सा खुल गया ना, so that you call it the intermediate configuration. Any doubts? Why so? Why do you put some air out? The heat exchanger can only cool a certain mass of air. अब तुम्हारा जहाज गर्म है फ्लाइट में, हीट एक्सचेंजर के ऊपर से तुमको थोड़ा तो लोड कम करना पड़ेगा ना, you have to reduce the load on the heat exchanger. So the air which would have otherwise gone into the heat exchanger blocked it. Like, go out. I will take it from air conditioning. Am I clear? So how many configurations do we have? Closed, open, and intermediate. Closed can be in ground or in flight whenever it is cooled. However, open will only be on ground and intermediate will only be in the flight. I hope I have made myself clear. Okay? Now, yes. भाई एक बार इंटरमीडिएट स्टेज एक बार बता दो वापस। इंटरमीडिएट स्टेज हम लोग इन डिटेल ना वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना यहाँ पे करेंगे कि इंटरमीडिएट में हो क्या रहा है, बट आप मेरे को बताओ आपको क्या नहीं समझ आया उसमें। भाई क्लोज ओपन तो आ गया, इंटरमीडिएट थोड़ा सा मतलब नहीं आया। आपने बोला इंटरमीडिएट में वो डक्ट एक ओपन होगी। ओके, सो टेल मी समथिंग कुणाल, आप इन फ्लाइट हो एक प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट के अंदर, अंदर गर्म हो गया, वेंटिलेशन पूरी होके गर्म हो गई है, लेकिन तुम खिड़की पूरी खोल ही नहीं सकते, हाँ भाई। है ना? क्यों? क्योंकि फट जाएगा, हम्म। तो you cannot do it in open configuration, so you have to rely on करेक्ट। your heat exchangers. हम्म। But will your heat exchangers give you enough cooling? नहीं। नो। So don't you think you should throw this warm air out? यस। Yes, very good. So in this outlet valve जो है ना, ये स्किनर आउटलेट वाल्व, हम्म। इसके अंदर एक छोटा सा फ्लैप होता है एक और। So this valve is a big this big of a valve. इसके अंदर एक और छोटा एक छोटू सा और वाल्व होता है, अच्छा। ठीक है? उसके जस्ट ये हम्म। जैसे सर्कुलर वाल्व है, इसके अंदर एक और छोटा वाल्व होता है। सो पूरा पूरा जो बड़ा वाल्व है वो बंद है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा वाल्व है, वो फ्लैप है, वो थोड़ा खुल जाता है। ये क्या करता है? जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, थोड़ी सी हवा बाहर फेंक देनी चाहिए, थोड़ी हवा बाहर फेंक देता है कंटिन्यूसली, ताकि हीट एक्सचेंजर हीट को ऊपर कर सके। ओके। हम्म। Did you get it now? ये यस यस। Are you sure? यस। Okay, now let's understand. Let us understand. I told you ground and I told you in flight. Now, the AEVC, the Avionics Equipment Ventilation Computer or the controller, has its own logics. Okay? When I tell you you're on ground, what do you think? You think, yes, I'm sitting on the ground, the main landing gears are compressed. Perfect. You know? I'm on flight. Main landing gears are not on ground. See, it's not that simple, okay? For the purpose of avionics ventilation. Okay? The avionics computer thinks that it is on ground in these cases. The avionics equipment ventilation controller thinks it is in flight in these cases. Let's explore these cases. On ground, at any given point of time, the main landing gear is on ground. It thinks that it is on ground, right? And, and, but there is an and here. शर्त एक है, provided that the thrust levers are not set for takeoff. What does this mean? This means if the thrust levers are set for takeoff, it will consider that I am in flight.
सो आप ग्राउंड पे हो, टेक ऑफ रन पे हो, लेकिन AEVC फ्लाइट मोड में चले जाए, ठीक है। सो हियर द ग्राउंड एंड फ्लाइट इज नॉट बेस्ड ऑन द मेन लैंडिंग गियर ओनली. So taxi, you're on the ground, you have pushed back, you have started up, you're taxiing. When you press the takeoff config test push button, or when you advance the thrust levers for toga or flex MCT, then it will go into the flight mode. जब तक तुमने टेक ऑफ नहीं किया है, या जब तक तुमने टेक ऑफ कन्फिग प्रेस नहीं किया, वो ग्राउंड मोड पे. Got the point? So when will it be in ground mode? The main landing gear is on ground and thrust lever is not set for takeoff, and takeoff config push button is also not pressed. तुमने इसमें से कोई भी एक हटा दिया ना, फ्लाइट मोड में चले जाए. अच्छा, फ्लाइट मोड में कैसे? At any given point of time, the main landing gear is in the air. ठीक है, ऑफ कोर्स फ्लाइट मोड. लेकिन जब तुम ग्राउंड पे हो, अभी मैंने बोला जब तुम ग्राउंड पे हो, तुम टोगा डाल दो, वो कंसिडर करेगा दैट यू आर इन फ्लाइट. सो the main landing gear, if the main landing gear is on ground and you have set the thrust levers for takeoff, or if you have pressed the takeoff config push button, whichever, as per normal SOP क्या करते हो, पहले takeoff config push button डालोगे ना. As per normal SOP you will press the takeoff config push button. पता है takeoff config push button क्या करता है? It simulates a toga setting inside all the computers. So अगर तुमने flap नहीं डाला है, या there is some configuration warning or rudder trim is not at 0, it will give you a red warning or an amber warning, amber caution, because it simulates the application of toga thrust. So as soon as you press your takeoff config push button, there's a signal which goes to the equipments where it tells them कि भाई अभी तो take off होने वाला, आप flight mode में चले जाओ. In fact, this is so apparent whenever we also go for flying, especially in the neo aircrafts, the neo engines. As soon as me as the PM, when I do my after or whenever I do my taxi flows, what are my taxi flows? Auto brake to max, terrain on Indy as required, right? Then you go all the way down, ATC, transponder panel as required, communications as required, and then you go to your mode selector, and then you go to your radar and predictive winch. Once you go there and you press the takeoff config test push button, you can literally hear the sound inside the cockpit change from a closed configuration to an open correction, from an open configuration to a closed configuration. Clear? Yes. सर अगर रडर ट्रिम न्यूट्रल नहीं हो तो भी बजेगा अभी. Yes, absolutely. Configuration warnings. अच्छा, वो इंडिकेशंस डिस्प्लेस में नहीं दिखता, जो ब्लू टेक ऑफ नो ब्लू देखते हैं हम जब कॉन्फ़िगरेशन टैप करते हैं, तो वहां पे आता है कि ये ब्लू में जो दिख रहा है वो एक्चुअली उस कॉन्फ़िगरेशन में हमने डाला नहीं है, इसलिए इंडिकेशन टाइप. Yes, you are absolutely right. So this once happened to one of my friends actually. What happened was, earlier you did not have the LCD displays, you had the CRT displays cockpit, in the old aircrafts. So अगर मान लो अब sun की gleam आ रही है ना, so you will not be very easily able to distinguish between green and blue. तो वही टेक ऑफ कन्फिग था, उसने ऐसे जल्दी जल्दी में CRM नहीं हुआ होगा. And what happened was, they were about to take off and they set the thrust levers, but the flaps were not in the correct setting. हुआ क्या था, there was a last minute runway change, not a runway change, there was a last minute performance change. So new speeds were inserted, a new configuration was inserted, but they did not do the departure change checklist. So in the departure change SOP, there's a different SOP for departure change. There's an entire different flow for departure change. That departure change flow was not done. So in the departure change flow, basically you have an intersection departure. That's in case a separate performance was calculated, and in that performance
from config 2 you were supposed to do to config 3. So in the FMS you had put config 3, but तुमने actually flap setting change नहीं किया था, and जल्दी में they put the thrust levers to whatever flex temperature was there, and ting 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 ting, we had a continuous repetitive chime. They had to reject the takeoff. This is one of the few incidents. Okay, without now under these conditions when you're on ground, अगर कोल्ड है तो क्लोज हो जाएगा, हॉट है तो ओपन हो जाएगा. अगर फ्लाइट में कोल्ड है तो क्लोज हो जाएगा, हॉट है तो इंटरमीडिएट हो जाएगा. नाउ AEVC considers what as cold and what as hot. Let's understand this. AEVC looks at two things. AEVC looks at the duct temperature and AEVC looks at the skin temperature. What is the duct temperature? It is the temperature of the avionics duct. It is the temperature of the avionics inlet duct. Inlet. Okay. Now, and it looks at the skin temperature, the temperature of the heat exchanger basically. Now, if you're on ground, it looks at the duct temperature and the skin temperature. If you're in flight, it does not look at the skin temperature because any which ways you will be using the skin or heat exchanger, so it becomes completely irrelevant, you know. कुछ भी हो, skin or heat exchanger तो in flight काम करेगा ही, right? Now, in the duct temperature, अगर वो duct temperature 40 से ज़्यादा है, it's considered to be hot. 40 से कम है, it's considered to be cold. Skin temperature 12 से ज़्यादा है, it's considered to be hot. 9 से कम है, it's considered to be cold. Now I'm giving you a few scenarios. If any of these become hot, it will become in the hot configuration, which is the open configuration. If any of these are breached, अगर ये नहीं है, open में चल जाएगा. Both of these have to happen. That means the duct temperature is supposed to be less than 40 and the skin temperature is supposed to be less than 9 for it to be in the closed configuration on ground. Okay, कुछ सोचो ना. सर ये मुझे नहीं समझा क्या पूरा. Okay, I will explain this to you with the help of examples. There are two temperatures. One is the temperature of the skin, one is the temperature of the duct. Okay, now I am giving you an example. The duct temperature is 5 degrees, sorry, the skin temperature is 5 degrees Celsius and the duct temperature is 30 degrees Celsius. What will be the configuration? सर कोल्ड तो मतलब क्लोज. Closed configuration. Kunal, हाँ. are you following? Are you there? Yes, bhai. Great. So it will be the cold configuration. अब इनमें से कोई भी अगर मान लो स्किन टेम्परेचर, अच्छा मान लो अभी स्किन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गई, अब क्या होगा? अब भी ये क्लोज्ड में ही रहेगा बिकॉज इट हैज नॉट बिकम हॉट, इट हैज नॉट ब्रीच्ड द हॉट लिमिट. बट इफ this temperature becomes 13, what will happen to the configuration? हॉट हो जाएगा. Hot configuration, that means the valves will open. ओके. Okay, now what if अब अगर ये 13 पे है, अब ये वापस 10 हो जाए, अब ये किस पे रहेगा? अब भी ये ओपन पे ही रहेगा. क्यों? क्योंकि it has to decrease all the way below 9 to become into the closed configuration. So अभी 10 पे भी open रहेगा. So when it is increasing, it will change from cold to hot when it is crossing 12. When it is decreasing, it will change from hot to cold when it is crossing 9 degrees Celsius, decreasing below 9 degrees Celsius. That is the funda. Okay. So now let's say तुमने ये देख लिया कि ये मेरा 12 से ज्यादा ब्रीच हो गया, तो it is going in open configuration. Now tell me something. अगर ये 5 है लेकिन मेरा डक्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब क्या करोगे? तब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी?
तब भी सर ओपन होगा। मेरे हिसाब से हाँ So हॉट रहेगा यानी तो। क्या, even if, so the skin temperature increase or the duct temperature increase, either of it increases, it will go into the open configuration. देखो हॉट हो गया, अगर डक्ट हॉट हुआ रिस्क नहीं लेने का, खोल दो। स्किन हॉट हुआ रिस्क नहीं लेने का, खोल दो। स्किन हॉट हुआ का मतलब क्या है, स्किन एयर हीट एक्सचेंजर सही से काम नहीं करेगा क्योंकि स्किन ही तुम्हारी हॉट है। डक्ट टेम्परेचर ज्यादा है मतलब हवा बहुत गर्म है, खोल दो। आई होप यू गॉट द लॉजिक नाउ। On the other hand, on the other hand, in flight, the numbers are again different. The duct temperature is looked at. Hot if it is more than 35, cold if it is less than 32. Any doubts here? Now when you see all of those different, वहां पे टेक्स्ट में बहुत लंबा लंबा करके तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग लिखा हुआ है. It becomes really confusing. Now you can refer to these notes and you can refer to that FCOM and you can make meaning out of it. Yes. सर व्हाट इफ द टेम्परेचर इज 33 और 34? Okay, good question. What if the duct temperature is 33 or 34? So to answer your question, we will look at this particular diagram. Let's say on a very fine day, when you're in flight, the duct temperature is 30 degrees Celsius. It will be enclosed. It increases to 31, it will remain closed. It goes to 32, it will remain closed. 33, it will remain closed. 34, it will remain closed. 35, it will remain closed. As soon as you cross 35, it will go into the intermediate configuration. Okay, now you're in the hot. Now let's say the temperature is coming down. So it goes all the way down. Stand by. Okay, now when the temperature is reducing, 35 क्रॉस हो गया and it is reducing, लेकिन it has to cross all the way below 32. जैसे मैंने वहां पे 12 और 9 डिग्री सेल्सियस के लिए बताया था, सेम लॉजिक. So it will remain in the intermediate configuration until it reduces below 32. Clear? Kunal, any doubts? नहीं भाई. So now when you actually see your FCOM and you read through your FCOM, you will come across three configurations, 1 2 3. अब वो configurations के ऊपर बहुत लंबा expansive text है. तीनों configurations के लिए जो तुम्हारा expansive text है, all of that is summarized into this one table. ठीक है? So it has been simplified for you. Now let us see what are the configurations themselves. What are the configurations themselves? Are you ready? Let's start. In the open configuration, as I've told you, see, you have how many valves? You have 6 valves. How many valves do you have? You have 6 valves. What are they? Repeat after me. Skin air inlet, skin air outlet, skin air heat exchange. For abnormal scenarios, you have air conditioning. Air is coming, cooling the equipments, getting heated up, and it is going to the heat exchanger. It can go to the outboard of the aircraft. And then there is, we can bypass the heat exchanger and send it to the cargo underflow. That is the skin exchange inlet bypass. And here we have somewhere here we have the outlet bypass. Okay, here only two valves are open, all the other valves are closed in the open configuration. Only two valves are open, the skin air inlet valve and the skin air outlet valve are open, all others are closed. Let's see how does it work. Fresh air, cold air from the outside is coming. It is getting sucked in by the blower, blowing cold air into the avionics equipment, and it is going, hot air is coming out. The extract fan is running, which is responsible for taking cold air from the cockpit through the cockpit panels, ventilating them, and then again extracting it outboard through the skin air outlet valve. How simple is it? You can open your FCOM, you can open to the open configuration and look at the diagram there itself. आपको ये same चीज दिखेगी. All the other valves are closed. Refer to it. Have you all seen it? Okay, great. Now, Kunal, देख लिया? हाँ भाई. अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने वो लॉजिक पढ़ लिया ना,
अब देखो ये सारे हमारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये हमारे लिए कितने सिंपल हो गए. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन. रियली सिंपल. Fresh air, whatever the cold air is there, the cold air is coming and it is being blown into the avionics equipment. It will become hot. This hot air, along with the hot air that is coming from the ventilation of the cockpit panels, is being pushed by the extract fan. Okay, it is being pushed by the extract fan. This extract fan is pushing all the air. No. Maybe let's say 90-80% of the air through the skin exchange isolation valve through the skin air heat exchanger. This skin air heat exchanger cools down the air and ये ठंडी हवा को वापस रिसर्कुलेट करता है. सो वी हैव अ कंटिन्यूअस सर्किट. क्या ये कंटिन्यूअस सर्किट में फ्रेश एयर आ रही है? यस, फ्रेश एयर आ रही है. कहां से? यहां से और यहां से. 100 हवा अगर यहां से आ रही है, if you have 100 units of air coming out of the avionics compartment, 80 units is being recirculated, the rest is being thrown into the cargo underflow. The rest is being thrown into the cargo underflow. Clear? गर्म हवा ठंडी हो गई, recirculate हो गई. It's that simple. This particular valve, the air conditioning inlet valve, will only operate in abnormal situations. Clear? Now talking about, अच्छा, जो दो वाल्व्स उसमें खुले थे, सुनो, जो दो वाल्व्स इस वाले में खुले थे, ये और ये खुला था ना, और बाकी सारे बंद थे. जो क्लोज कॉन्फ़िगरेशन इसका पूरा ऑपोजिट है. जो चार वाल्व्स बंद है वो खुल जाते हैं, ये दो वाल्व्स बंद हो जाते हैं. कितना इजी है. So only these two valves are closed. Air conditioning inlet valve, हाँ, but this valve is only for operational. This is for only abnormal operations. This will remain closed in both conditions. All other valves are open. 3 valves are open. Clear? I have taught So you. in case of any kind of abnormal activity, अगर कुछ हो गया तो मतलब सारे सील हो जाएंगे, बस एयर कंडीशनिंग से सीधा हवा आएगा कूलिंग के लिए. And बाहर चल जाएगा. Okay, we will study that in any abnormal condition, especially the smoke configuration that we are talking about. Okay, now temperature logic. I've taught you the temperature logic. I don't think you have any doubts here. Now let's talk about the intermediate configuration. The intermediate configuration is the same as this configuration. खाली यहाँ पे एक small internal flap open हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हवा इतनी गर्म है, आपके डक्ट्स इतने गर्म है, आप चाहते हो कि यार हवा थोड़ी बाहर फेंक दो. सो स्किन एयर आउटलेट वाल्व opens up a little bit. ठीक है, the skin air inlet flap, ये वाला is closed, ये वाला is closed, ये वाला भी क्लोज्ड है, लेकिन इसके अंदर एक स्मॉल इंटरनल फ्लैप है, वो ओपन होता है. सो हवा कैसे जाती है? ठंडी हवा यहाँ से आती है. डक्ट ही इतनी गर्म है ब्रो कि गर्म हो जाती है, लेकिन इतनी गर्म डक्ट है, यहाँ से भी हवा आ रही है गर्म. इतनी गर्म हवा है कि यार ये अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर ही रहा है, तुम कार्गो अंडरफ्लो पे भी फेंक रहे हो, लेकिन तब भी इतनी गर्माहट है कि आप उसको थोड़ा बाहर फेंक रहे हैं. देयर इज सो मच हीट दैट यू नीड टू थ्रो समथिंग आउट. Any doubts? These are all the normal operations. Now let's go to the abnormal operations, shall we? Resuming. Okay, have a look. So now let's talk about abnormal operations. Abnormal operations, दो तीन cases में हो सकते हैं. First type of abnormal operation is that either I have a fan fault. Now the blower can be under fault or the extract can be under fault. Okay? कोई doubt? जब भी ये fault light आएगी एम्बर में buttons के ऊपर, do you know where the blow and the extract fault buttons are? They are on the ventilation panel. Now where is the ventilation panel? It's on the overhead panel on the right hand side. Okay, let me show it to you. Here is the ventilation panel in front of you. Okay, you have blower, you have extract. Whenever on the right hand side of a button or on the left hand side, wherever you have auto written, ठीक है, उसका कोई automatic function होगा. ठीक है, so we need to know it. Let's have a look.
Now for the purpose of a blower and an extract, दोनों में fault light आ सकती है. दोनों में fault light क्यों आती है? See, there are three cases in which both of them will have a fault light. पहली बात पंखा है. If the pankha slows down, that is, if the pressure of the blower fan or if the pressure of the extract fan respectively slows down, then the fault light will come on. Let's say if the AVC controller, let's say if the controller fails, that means there is no signal which is going to the extract and the blower fans, not even to the fan speed controllers. Okay, then in that case, both of them have a fault light on. We also have a fault light when there is smoke warning. Now, in the case of smoke, power failure of the computers or the blower extract, pressure low, दोनों की fault light on होगी. There's only one case where only the blower fault light will come on, which is the duct overheat. Okay. Now, the fault light basically it's a prompt to press that button. When you press that button, it turns the blower fault light to, it will reset the fault circuit and then it will put it to override. ठीक है, generally off या on रहता है, यहाँ पे it's override. When you press it, override comes out in white. When you put the blower to override, the blower stops. Conversely, on the other hand, it's opposite for the extract. If you put the extract fan to override, the extract fan will continue running. That's the difference. You can never have the extract fan stop. The extract fan is always, always, always running. Whenever you press any of the buttons, that means it has been overridden. That means it is an abnormal condition and the air will then be taken from the air conditioning system via the valve, air conditioning inlet valve, which is on the bottom left hand side. Okay, so these are abnormal operations. Anytime there's an abnormal operation, ये हो जाएगा. You also have something known as a smoke configuration. There's a smoke detector which is placed. I'll show you where it is placed. And then the third abnormal operation is AEVC failure. Let's see if there is either, not one, either. If we have a blower fault or an extract fault and we have override in the same. Whenever you override it, how will the configuration change? In flight, see, all of these faults will happen in flight. Ground पे there कुछ फर्क नहीं. You're on ground. ठीक है, there are system reset procedures available on ground under the QRH. So, how does a normal closed circuit look like? The normal closed circuit looks like this, and then you can have air coming inside from here and you can have air going outside from here. Whenever you put the blower to override, this valve will close and this valve will close, air conditioning will open. Whenever air conditioning is opening, you do not want air conditioning air to go here, because यार ये बहुत कार्गो अंडरफ्लो, सोच तो इतना बड़ा जगह होता है, मैं क्यों यहाँ पे अपनी ठंडी हवा वेस्ट करूं, है ना. मेरी हवा यहाँ से डायरेक्टली सिर्फ रिसर्कुलेट होते जा रही है. Why should I waste it? I should not waste it. Okay, so what is air is coming from the air conditioning ducts, it is being recirculated inside. Any override, the system will automatically go in closed configuration, even on ground. Can you tell me one procedure in which you deliberately press the extract to override? Do you know any such case, normal case on ground, when you press the extract to override? Operations in heavy rain on ground. In case you have operations in heavy rain on ground, you will press the extract push button to override. What will that do? It will put the entire system, it will command this valve to close. Again, repeat after me. कभी भी कोई भी fan को override करूंगा, the system will go in what configuration? Closed configuration. If I press any override, what will the system do? It will go in the closed configuration. That is, all these valves are closed. सर एक डाउट है. Yes. सर इसमें एयर बाहर कहाँ से जा रही है? नहीं जा रही है, लीक नहीं जा रही है, लीक हो रही है, लीक होगी. अच्छा. Okay, no, even not even the packs, not even the pressurization is foolproof. There are always leaks happening. Okay,
तो ये Now, जो लीक्स होता है, ये लीक्स डीकम्प्रेशन या फिर हमारे कैबिन भाई के these are साथ very कुछ minor दिक्कत नहीं leaks, देता? Subal. These are very minor leaks. These are very minor leaks. In fact, आपका आउटफ्लो वाल्व इनफैक्ट पता है 15,000 फीट पे क्लोज हो जाता है एज पर योर एफकॉम लिमिटेशंस. एज पर योर एफकॉम लिमिटेशंस आपका जो आउटफ्लो वाल्व है वो 15,000 फीट पे क्लोज हो जाता है bro. तब भी आप प्रेशराइजेशन ऊपर तक कैसे मेंटेन करते हैं? सी देयर आर लीक्स ऑलवेज हैपनिंग. आपके विंडोज से लीक होता है, आपका जो कार्गो कैबिन के जो 4 डोर्स है वहां से लीक होता है, आपका जो कार्गो डोर्स है वहां से लीक होता है, आपका जो इनटेक वाल्व, इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है वहां से लीक होता है. लीक्स फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस. ओके, चलो नाउ रिज्यूम. सर एक 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 सॉरी सॉरी यस, सॉरी बोलो. डिस्टर्ब। धीर कृष्ण पूछ रहा था इसके बाद सीपीएल का क्लास होने वाला है? नेगेटिव. नहीं ना? एक बार टेक्स्ट डाल दोगे, मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, एनी डाउट्स? The air conditioning inlet valve opens. The air conditioning inlet valve opens क्योंकि और कोई तो सोर्स है नहीं. आपने स्किन एक्सचेंज का जो इनलेट वाल्व है, स्किन एक्सचेंज का जो आइसोलेशन वाल्व है वो भी तो बंद कर दिया. ठीक है, सॉरी, स्किन एक्सचेंज का जो इनलेट वाल्व है और आउटलेट बाईपास वाल्व है ये दोनों भी तो बंद कर दिए. अगर मैं इसी चीज को एक सिंपल वे में समझूं, द एयर कंडीशनिंग इनलेट वाल्व एंड द स्किन एक्सचेंज आइसोलेशन वाल्व, सिर्फ ये दोनों वाल्व्स खुले हैं, बाकी सारे वाल्व्स क्लोज्ड. This is the simplified version of it. Now, if I talk to you about the smoke configuration, see in the smoke configuration, again abnormal situation ये है, ये आपकी abnormal situation है. अगर हमने को इसको smoke configuration में consider करना है, अगर मेरे को इसको smoke configuration में consider करना है, so just one second, I think there's a lot of disturbance. Subal, attention. Okay. आपने ये देख लिया. इसमें अब देखो, अगर आपके पास स्मोक होता है, in the case of a smoke, the blower and the extract fault light both will come on. The blower and the extract fault light both will come on. So in the case of a smoke configuration or a controller failure, you basically the idea is to not let the smoke recirculate. So recirculation के जितने भी means हैं ऑफ कर दो. कंट्रोलर फेलियर है, मैं मॉनिटर ही नहीं कर पाऊंगा कुछ, ना मैं डक्ट ओवरहीट मॉनिटर कर पाऊंगा. क्या मैं डक्ट ओवरहीट मॉनिटर कर पाऊंगा यूवीसी में? नहीं. Will I be able to monitor the temperatures of the fan? Will I be able to monitor the speeds of the fan? No. What is the safest thing to do? Put it in the smoke configuration. हवा आएगी ठंडी करके बाहर चली जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं. So whenever you press both of them to override, both the extract and the blower to override, what will happen? The air conditioning duct will open, air will go through the air conditioning duct to the avionics equipment and all the way down to the skin air outlet valve and outboard of the aircraft. That's it. Why is this done? All other valves are closed. सिर्फ ये वाला valve और ये वाला valve खुला है. The air conditioning inlet valve is open, outlet valve is open partially. All other valves are closed. This is the simplified diagram. Now tell me something. This valve is closed. This valve is closed. This valve is closed. This valve is closed. Right? मैं उनको एक कमांड दे रहा हूँ, भाई क्लोज हो जाओ. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. There's slight change. Slight change क्या है? The slight change is like, so the slight change is like, for the purpose of a controller failure, it is the exact same as the smoke configuration. However, the skin air inlet valve, which is this valve, the skin exchange isolation valve, which is this valve, and the skin exchange outlet bypass valve, which is this valve. 1, 2, 3. This will remain in the last known position. क्योंकि बेसिकली एवीसी फेल हो गया तो उसके पास कमांड देने के लिए कोई नहीं है ना, फंडा ही है.
एनी डाउट्स? और इन तीन, इसको तो खोल देगा, इसको बंद कर देगा और इसको पार्शियली ओपन कर देगा. अगर मैंने इसको बंद किया हुआ, चलो हवा यहाँ से लीक नहीं होगी. गुड, गुड फॉर मी. एनी डाउट्स? दैट इज ऑल अबाउट avionics ventilation. End of the avionics ventilation topic. However, we forgot to cover one thing, which is the fan speed controller. You can go to your FCOMs, air conditioning, pressurization, ventilation, which is 2130. Go to 2130, go to 2130 20. Go to main components. Under main components, please have a look at fans. The fan speed controller controls the speed of the fans as a function of the temperature of the air. There are two cases, high speed and low speed. Kunal, खोला, देखा? हाँ भाई खोल लिया. अच्छा, देख लिया, right? Talking about battery ventilation, very simple, very simple. In the case of battery ventilation, जो बैटरी आपकी एवियोनिक्स बे में पड़ी हुई है, उसके ऊपर साइड में एक बैफल टाइप का सिस्टम है. यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब कनेक्ट कर दी है जो फ्यूजलाज के आउटबोर्ड में. मैं आपको ना अगले टाइम मैं जब एयरक्राफ्ट ऑपरेट करूंगा, आई विल क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस वेंचुरी एंड आई विल शो इट टू यू. ओके, नाउ हाउ डज इट एक्चुअली वर्क व्हेन यू फ्लाइंग थ्रू एयर? व्हेन यू फ्लाइंग थ्रू एयर, यहाँ से बहुत तेजी से हवा पास करेगी. Whenever air is flowing at such a high speed, it creates aerodynamic suction due to the low pressure at this place, right? So air will eventually be drawn out. अगर बैटरी गर्म है तो वो हवा गर्म हो जाएगी and it will be sucked out. This is how the battery is ventilated. Any doubts? Battery ventilation complete. You can open your FCOM. उसमें भी इतना ही लिखा है. Okay? So we have completed all the way till 21, 30, 40. Now let's go to 21, 30, 50. Lavatory and galley ventilation. How many lavatories do we have? We have one lavatory in the front. We have two lavatories at the back. You do not want this air to recirculate. So you have an extraction duct on all of these three lavatories. Okay? यहाँ से जो extraction duct है, यहाँ पे आपके पास smoke sensors रहते हैं and you also have cabin temperature sensors. You also have cabin temperature sensors. ताकि सबसे गर्म हवा सेंस हो बेसिकली. लैबोरेटरी से गर्म हवा तो और कहीं नहीं होगी. Now, that being said, this air is taken out with the help of a small another extraction fan. This is very closely mounted to the outflow valve. आपके जहाज के पीछे का outflow valve होता है, right? वहां पे एक छोटा सा फैन भी रहता है जो यहाँ से हवा वेंटिलेट करता है. It's basically kind of like an exhaust fan inside your house here, and it basically puts it out through the outflow valve. Zero recirculation. Any doubts? No doubts. So we are done with 21, 30, 50 as well. Now we are going to do controls and indicators. बहुत सिंपल है यार, खत्म हो गया तो चैप्टर. ये भी इसमें से आपने 3-4 चीजें ऑलरेडी पहले ही की हुई हैं. Talking about controls and indicators. Do you need a break? Short break, 1 or 2 minutes? Nothing, right? Able to understand? Great. Talking about controls and indicators. Control panel. I've shown you the control panel on the Airbus. It's on the overhead panel. It looks like this. It has a fault light. It has a fault light. When do the fault lights come on? We have discussed this. Any doubts in the fault light? There are questions. I'm saying this again. There are questions very specifically stating when does the fault light of the blower come on. Okay. When you press either of them, the fault light gets reset. The override light comes out in white. Whenever you override the blower, it stops. Whenever you override the extract, it runs. No doubts. You have an auto function over here. The auto function is basically of the avionics ventilation configuration, which we again have studied. No doubts. Easy. Are we done with controls?
कुछ और है पढ़ने के लिए? सी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो ना, जिसके पे मैंने इतना टाइम दिया था पहले, आपको आगे की ये सारी चीजें सिंपल लगेंगी. ओके. On the cabin pressure page, you can have a list of all the ecam pages. हाँ? आप वो प्रिंट आउट लेके रख लो. That's what I really advise everyone. Keep a printout of all of these pages. On the cabin pressure page, what you basically have in the cabin pressure page, हम लोगों ने कल pressurization किया था. We did pressurization the other day. You have landing elevation over here. You have 3 dials over here. What are the 3 dials? Here you have delta P. यहाँ पे क्या है? cabin altitude. Cabin altitude cabin altitude. राइट में. Yes. ऑल्टीट्यूड राइट में रहता है, कैबिन ऑल्टीट्यूड भी राइट में रहता है. कैबिन वीएस यहाँ पे. ठीक है, कोई डाउट? यहाँ पे ऊपर लैंडिंग एलिवेशन. यहाँ पे यू हैव एन एयरक्राफ्ट. यहाँ पे आपके पास कहीं पे सेफ्टी वाल्व है, यहाँ पे आपके पास आउटफ्लो वाल्व है, यहाँ पे सिस्टम 1, यहाँ पे सिस्टम 2. ये सारे इंडिकेशंस हैं. वेंटिलेशन की इंडिकेशंस केवल और केवल ये जो छोटा सा जहाज बना हुआ था, इसके इधर 2 वाल्व्स हैं, like this. Okay. In normal operation ये सारा कुछ नहीं दिखता. In normal operation you don't see any of this. One second. सर 11-11 हुए, कुछ विश मांग लो. तुम दोनों भी मांग लो भाई कुछ तो. फ्रेंड दे रहा हूँ, मांग लो भाई. This shows that this guy has a girlfriend. अच्छा जी, ऐसा है क्या? सर मेरी कभी लाइफ में गर्लफ्रेंड थी ही नहीं सर. पाप चढ़ेगा भाई. पाप कैसे चढ़ेगा इससे? झूठ झूठ बोलने का. आप कर लो पहले. Okay. This is how it looks like in normal operation, guys. This is how it looks like in normal operation. Inlet valve will be not shown. This is how it looks like in normal operation. Okay. Inlet outlet दिखाता है कि नहीं दिखाता है? One second. Yes, this is how it will be shown. Okay. Inlet will be there in white. Outlet will also be there in white. ठीक है. यहाँ पर जो आपके 2 वाल्व्स हैं, ये आपको पोजीशन दिखा रहे हैं इनलेट एंड आउटलेट वाल्व की. अगर ये बंद है तो पूरा बंद है, खुला है तो पूरा खुला है. अगर ये दोनों ऐसे खुले हैं, दैट मींस इट्स इन द ओपन कॉन्फ़िगरेशन. दोनों अगर बंद है, देन इट्स इन द क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन. अगर इनलेट बंद है और ये ओपन है, तो इट्स इन द इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन. इजी? कोई डाउट? At any given point of time, if you have amber crosses on anything on the ECAM, this is across any other system, that means that information is not valid or that position is unavailable, that information is unavailable. Okay? Quit out. For the blower, if it is an amber like this, that means the valve is in transit. But if ये outlet valve यहाँ पे ऐसे green में, इसका मतलब है वो partially open है, because it's in the intermediate configuration. Now, let's say if you have some fault. For example, valve close होना चाहिए, पर वो valve actually open है. That means the valve disagrees. आपने extract override दबा दिया, क्या होगा extract override से? It will automatically go into the closed configuration. Any override you press, it will automatically go into the closed configuration. Let's say that valve doesn't go into the closed configuration. That means if there's a disagreement, तो भी amber में होगा. ठीक है? Whenever there is a fault inside the system, be it a blower fault or be it an extract fault. मान लो अगर ब्लोअर फॉल्ट है, तो यहाँ पे वेंट एम्बर में आ जाएगा और ब्लोअर एम्बर में आ जाएगा. ओके. कहाँ लिखा हुआ है? यू कैन गो टू द इंडिकेटर्स पोर्शन.
under the cabin pressure page. Point number 1. Vent message कब आता है? White में. Normally white में रहेगा. Normally ये पूरा चीज white में रहेगा. ये amber में कब रहेगा? जब या तो blower fault हो गया, या तो extract fault हो गया, या avionics का system fault हो गया. मतलब system fault means AVC failure. Okay. So if there is a blower fault, blower will come in amber. If there is an extract fault, extract will come in amber. Or if there is any other fault in the ventilation system, this ventilation will also come in amber. कोई doubt? पक्का? That is all for today. Any doubts? Any doubts in today's class? सर बैटरी हो गया क्या? बैटरी हो गया, लैबोरेटरी हो गया. ओके ओके. So because we had some confusion कि यार ये ventilation inlet और outlet valve कैसे दिखेंगे, this is how exactly it will look. I'm just clearing out the confusion here. The vent will come in white, inlet and outlet will come in white. Valves, I have taught it to you. If there is a fault in the ventilation system, any fault, be it avionic system fault, blower, extract, whatever fault, vent will become in amber. If it is associated with the help of with the blower fault, blower will also come in amber on the left hand side, extract will come on the right hand side. That is all for today.